Congress launches massive nationwide protest against SEBI chief Madhavi Puri Bach. The India bloc led by the Congress on Thursday launched a nationwide protest in front of Enforcement Directorate branches. The India bloc launches the protest demanding formation of a joint parliamentary committee and a CBI probe into corruption allegations against SEBI chief Madhavi Puri Bach. The Congress party demanded the resignation of SEBI chief Madhavi Puri Bach and for a joint parliamentary committee investigation into Hindenburg Adani controversy. MP from Assam and deputy leader of the Congress party in the Lok Sabha, Gaurav Gogoi, expressed significant worries regarding the decreasing trust public in SEBI. Gogoi disapproved of SEBI's perceived lack of thoroughness in investigating the Adani Group following the Hindenburg report. देखिए, जो बातें निकली है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। लोगों का विश्वास जो सेबी पर था वो अब रहा नहीं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सेबी अडानी के जांच को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मिला और स्पष्टीकरण के विपरीत आज केंद्र सरकार सेबी और अडानी के बीच में जो संपर्क है उसके बचाने को लगी है। मुझे तो लगता था कि वित्त मंत्री स्पष्टीकरण मांगेगी सेबी चीफ से, लेकिन वित्त मंत्री सेबी और सेबी के द्वारा अडानी को बचाने में जुड़ी हुई है और इस षड्यंत्र के विरोध में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि सेबी की चीफ अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और वित्त मंत्री पर और ये पूरी उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए और सारों मामले पर एक जेपीसी होनी चाहिए। Protests were also staged in front of ED office in Guwahati, city of Assam, against the alleged misuse of investigation agencies in the country to secure Adani monopolies. The Congress alleged that PM Narendra Modi is using SEBI as a tool to protect Adani. In a recent report published earlier this month, US-based Hindenburg Research claimed on August 10th that SEBI chairperson Madhavi Puri Bach and her spouse Dhaval Bach were investigated in little-known offshore funds involved in the suspected Adani money transfer controversy. Nevertheless, Bach and her husband have rejected the accusations as unfounded and claimed that Hindenburg Research was undermining the credibility of capital market regulators SEBI and trying to tarnish the reputation of its chief instead of responding to a show cause notice. The accusations lead to a political battle with Congress and other India bloc parties, calling for Madhavi Puri Bach's dismissal and a JPC investigation. News Desk report, Any News.